Yes, Munazar Irfan, how are you doing? Yes, sir. I'm good. After sir, Alhamdulillah, ठीक ठाक है खैरियत से। So जी आप can you feel any improvement, Munazar Irfan? yes, sir. So Uh, आपको जी। जी जी आप क्या कह रहे हैं? So I was asking कि in which part of the language are you feeling improvement? आपको जो है ना वो लैंग्वेज के कौन से एरिया में improvement फील होता है? सर अब मैं कोई वर्ड है तो उसको सेंटेंस कर सकती हूँ। पहले नहीं थे बनते, अब तो बन जाते हैं। एंड समझ भी आने लग गई है इंग्लिश। जी और अ, मतलब अब जो वर्ड्स होते हैं जैसे वोकैबलरी के एग्जैक्टली। फ्रेजेस, इनके सेंटेंसेस बन जाते हैं। एंड जी जी जी। इंग्लिश जो आप बोलते हैं या कोई और हम्म, कंजर्वेशन कर रहा हो समझ आ जाती है। सही सही गुड यस। सो आई जी रिकमेंड वन थिंग फॉर यू कि आप लोग क्या किया करें देखें आप लोग खासकर ये यूट्यूब पे तो हम सब वीडियोस देखते हैं सो व्हेन यू आर वाचिंग जी यू नो टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक स्पेसिफिकली फॉर लिसनिंग एक्टिविटीज उसके लिए क्या किया करें कि वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब पहले आप लोग शुरू करें हिंदी एंड उर्दू वीडियो से अलॉन्ग विद सबटाइटल्स सही जब आपको पता चले जी कि सर। कौन से वर्ड का जी कौन से वर्ड के लिए हम क्या इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं vocabulary इससे आपकी वास्ट होगी सही and then after यस that सर। start watching such videos of English जिसमें क्या हो subtitles हो सही तो इससे पर एक फायदा ये होगा कि you will be able to translate English as well English to Urdu or Urdu to English as well when you're watching Urdu or Hindi videos with subtitles अच्छा सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया कि वॉच इंग्लिश वीडियोस विद सबटाइटल्स तो उससे आप लोग की फिर लिसनिंग और ज्यादा बेहतर होती जाएगी ओके फिर सर। क्या करें उसके बाद जी उसके बाद यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली रिमूव द सबटाइटल्स आप लोग बिना सबटाइटल्स की वीडियो देखना शुरू करें यू माइट फील इट अ बिट डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग लेकिन उसके बाद क्या होगा आपको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगेगी and after that the final activity I would say is ये मतलब आप लोग के लिए personally whenever you are free आप लोग क्योंकि वीडियोस तो देखते ही रहते हैं everyone watches videos or either on Insta or Facebook on YouTube or even on Snapchat तो कोशिश ये की अगर स्पेसिफिकली यूट्यूब क्योंकि उस पे जो है ना आपको जिस तरह का कंटेंट चाहिए होता है उसी तरह का मिल जाता है तो उस पे जो है ना अच्छा। ये जी सब टाइटल्स के साथ देखा करें सही एंड द फाइनल वन आई वाज टॉकिंग अबाउट के उसमें फिर क्या किया करें इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉन्ग्स इंग्लिश सॉन्ग्स सुना करें विद सब टाइटल्स और फिर आखिर में वो सब टाइटल्स भी हटा दिए करें बिकॉज इंग्लिश सॉन्ग्स आर अ बिट ट्रिकी टू लिसन उसमें क्या होता है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं गलत हो जाते हैं कि बंदा जो है ना बोल क्या रहा है तो उससे आपकी लिसनिंग एक्टिविटीज और भी जो है ना बेहतर होती जाएंगी एंड along with that try to speak as well as you listen सही ओके okay सर। yes Sayyid, yeah Sayyid Mubashir how are you doing Welcome, sir. Fine, thanks. And you? How are you, sir? Alhamdulillah I'm doing great as well so yes how was your weekend Sir, very well, sir. Good. very good Very well, good. okay great so could you tell me what did you do on weekend This weekend, sir, previous weekend I don't have uh, internet, internet issue. okay so I think you were a bit In you might be a bit in our uh-huh village, in our area, uh-huh because I oh am okay living okay in Parachinar agency. okay We yes and yeah there are a lot of internet issues over there. So yes. yes, could you tell us a bit about Padachinar? Actually, I am myself am quite interested in visiting over there. लेकिन मैं तिरा तक आया हूँ but I haven't gone far Here to is Padachinar. some जी terrorists living in. हम्म, कुछ लोग सर आप यहाँ पे ना वो डिस्टर्ब होते हैं तो इसलिए मसला हो जाता है। कभी इंटरनेट बंद हो जाती है, कभी बिजली नहीं होती सर। तो yeah हम actually यहाँ yes पे 10 दिन बिजली नहीं होती थी और नेट नेट भी नहीं था। हाँ हाँ yes आज जा exactly गई अब मुश्किल से। हम्म, अच्छा exactly and we are facing I myself am facing the same issues of electricity और जो है ना लोड यस शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पर because we have summer months now we have May यस June and July तो a lot of problems सर इंटरनेट exactly yeah exactly and I think we are going to face even more issues in June and July when the summer is going to go towards the peak so यस so सर। yes Asad Sultan how are you doing
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग सर सो फार? कैसे हैं आप? मैं ठीक था। आई एम फाइन सर। Great, great. So, do you remember anything from from the last class with Ma'am Afsha? सर वो बकायदा मैं को Hmm? फोर्थ पे गया हुआ था, फोर्थ पे गया था, इसलिए मैं Oh, लेक्चर ले नहीं सका। okay, okay. That's nice to hear. तो चले बट वो आपने वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है? Because we keep on sharing our video links हाँ, with मैंने you. वो जी होमवर्क को जो उनकी असाइनमेंट थी, वो टेस्ट हुआ, मैंने सही सही। हल कर दिया था। गुड गुड। और एक ये देखिए, ये भी किया करें आप सब लोग, इट्स फॉर एवरीवन के व्हाटएवर लेक्चर यू मिस, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो लाजमी देखा करें, बिकॉज हमारे जितने लेक्चर्स हैं ना वो सारे के सारे पिछले लेक्चर के साथ कनेक्टेड होते हैं। नाउ टुडेज लेक्चर इज अबाउट, जैसे मैंने सिर्फ को बताया, तो आज का हमारा जो लेक्चर है इट इज अबाउट देयर वाज एंड देयर वर एंड आल्सो अबाउट देयर विल बी। तो ये किस चीज़ के हिस्से हैं? इट इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस लेक्चर देयर इज। तो रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा उसके हवाले से फिर से सीख लेंगे कि क्या क्या सीखा था हमने, आप लोगों ने एक्चुअली। एंड तो क्या है उसके लिए फिर यू हैव टू एक्चुअली सी द वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की जो जो हुआ होता है लास्ट लेक्चर में, तो आप अगर एक नज़र देख लिया करें। एंड ऑल्सो वी गो थ्रू द पीडीएफ दैट वी शेयर विद यू, तो उसको भी अगर आप देख लिया करें ना, तो you will actually get the major idea of what we were talking about in the previous class। कि आप लोगों ने जो कुछ मिस कर दिया तो आप उसको तकरीबन ना हो तो 70 to 80% तक कवर कर ही लेते हैं। एंड अनदर थिंग इज कि आप लोग को अगर किसी भी टाइम एंड अगेन आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ लाइक दिस, तो अगर आप लोग को किसी किस्म की चीज़ में इशू हो तो आप लोग क्या किया करें, हमसे पूछ लिया करें। यू कैन स्टे इन कांटेक्ट विद मी एंड विद मैम आफ्शा एज वेल। सही। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वी आर देयर टू आंसर यू। सही। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलरली मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, और उनको किसी किस्म का इशू फेस होता है, ग्रामर में, स्पोकन में, कोई भी इशू हो, तो वो मुझसे एनी टाइम क्वेश्चन कर लेते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ आई रिप्लाई देम। सही। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव देम अ डिटेल्ड रिप्लाई, ताकि किसी किस्म का आप लोग को कंफ्यूजन या क्वेश्चन ना हो। सही। सो विल बी वेटिंग 3 more minutes कि और स्टूडेंट जो है ना वो ज्वाइन कर ले क्लास। तो क्या है उसके बाद फिर इंशाल्लाह विल स्टार्ट द क्लास। यस यस मैम मुसरत, हाउ आर यू डूइंग? Doing well, sir. How you been doing, sir? I'm doing great as well, thank you very much. Yes, so how are you last class? Uh, Sorry, sir. How was your last class? Last class was Yes. very good, and she described every point very well, and I am satisfied, sir. Okay, great, great. So, yes, if there is any, yes, I told you once, और आप तो अच्छा करती हैं सर कि आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछ लिया करती हैं मुझसे। सही। जी जी Yes, sir. could you tell me what did you do on weekend? Sorry, sir. What did you do on weekend, on the previous weekend? What did you do on? Weekend, ये जो पिछला गुजरा हुआ weekend है ना, previous weekend। सही। हाँ जी, So what did हाँ you जी, do on that? जी, तो आपने I'm जी, जी 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 एक्सप्लेन कीजिएगा। और मतलब ये पिछला जो वीकेंड गुजरा उसमें आपने क्या किया? मैंने क्या किया? जी जी, मतलब जनरली, जस्ट जनरली आपने क्या किया? या Okay. I was busy last weekend, and because of the children's paper going on, and ओके ओके या yeah, I was busy in preparation for children papers. ओके ओके, so that's good thing. So thank जी you very much, Musara. So I think we should we are almost, yes, the time's up, so I think we should start the class. Bismillahirrahmanirrahim. Today our class is going to be about we are actually have 4 topics in today's class. तो आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? देयर वाज। सही। तो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी देयर विल बी। सही। सो एक टॉपिक में हम क्या करेंगे, माजी के बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ करता था,
और एक टॉपिक भी फ्यूचर के बारे में कि क्या होगा, किस तरह होगा। And the third topic is going to be about cardinal and ordinal numbers. हालांकि you might be coming through these terms for the first time, लेकिन क्या है, ये ऑलरेडी जो है ना ये आप सुन चुके हैं, एक्चुअली आप इस्तेमाल भी कर चुके हैं, करते रहते हैं हम डेली बेसिस पे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स पे। इट इज नॉट समथिंग नॉवल, इट इज नॉट समथिंग न्यू। एंड द लास्ट वन इज टंग ट्विस्टर्स, अ बिट ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सही, सो यस, ओके। सो पिछली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, लेट्स मी शेयर PDF with you for your PowerPoint. Yeah. Okay. तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या सीखा था, देयर इज एंड देयर आर, कि हम बताते हैं चीजों के हवाले से कि एक पिक्चर है, यू वर गिवन अ पिक्चर एंड यू हैड टू डिस्क्राइब इट। आपने उसमें बताना था कि कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है, कौन सी चीज पिक्चर में मौजूद है। लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी किड्स प्लेइंग अराउंड, कि बच्चे हैं खेल रहे हैं, यू हैव द सन हियर, यू हैव अम्ब्रेलास हियर, यू हैव अ कैट हियर, एंड यू हैव फिश हियर, फॉसल हियर। तो क्या है, मुख्तलिफ सी चीजें हैं जो आपको बतानी थी। सही, एंड यू आर गिवन सम एग्जांपल्स। और इसमें फिर अच्छा आप लोग का स्ट्रक्चर इस तरह था कि देयर इज या देयर आर लगता सही अकॉर्डिंग टू नाउन, के नाउन अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हम देयर इज लगाते हैं, एंड इफ वी हैव प्लूरल नाउन देन वी यूज देयर आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देयर सन शाइनिंग इन द स्काई। सही, जिस तरह की पिक्चर पिछली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, दैट इज व्हाई वी से कि देयर इज सन शाइनिंग इन द स्काई इन द पिक्चर। There are children playing with the ball, कि तस्वीर में क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है ना वो बॉल से खेल रहे हैं। तो इस तरह करके क्या है कि आप वो स्ट्रक्चर बताते हैं, यूज करते हैं कि देयर इज है या आर है अकॉर्डिंग टू नाउन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सही, कि वो जो नाउन है, सन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, बॉय, वो कर क्या रहे हैं। सही, कि वो काम क्या कर रहे हैं। ओके। सो इसके बाद आप लोगों ने ये भी सीखा था बिट ऑफ प्रीपोजिशन वर्ब से, कि ये क्या है, आप लोग के पिक्चर में किस तरह एक जगह को डिफाइन किया जाता है। तो पिक्चर में आप लोग के पास टोटल, if I show you a video or a picture, you have actually 9 spots in that picture. तो 9 स्पॉट्स को, जो टोटल 9 स्पॉट्स होते हैं, जगह होती है तस्वीर में, उनको कैसे बयान करते हैं। जैसे कि ऊपर की जो बाएं हाथ की जगह है उसको कहते हैं इन द टॉप लेफ्ट, सबसे ऊपर की बीच की जगह एट द टॉप, और सबसे ऊपर की जो राइट की दाएं हाथ की जगह है, सो यू कॉल इट इन द टॉप राइट। इस तरह करके आपको ये भी बताया गया था कि किस तरह हाउ यू आर सपोज टू टेल अ पोजीशन ऑफ अ थिंग इन अ पिक्चर, कि एक तस्वीर में जब किसी चीज की पोजीशन है तो उसको आप किस तरह बताएंगे। सही, ओके। यू आर आल्सो टोल्ड अबाउट क्वांटिफायर्स, कि किस तरह आप मैनी हो गया, मच हो गए, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम, लिटिल, इनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ओके। And then you are also told about the negative ones, कि किस तरह जो है ना you are supposed to use the negative form of there is या there are। सही, और any का भी यूज आप लोग को बताया गया कि any can be used in questions, कि आप जो है ना any को क्वेश्चन में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। are there any girls in the class। सही, any यहाँ पर मतलब कि कोई, कि क्या क्लास में कोई लड़की है या कोई लड़कियां हैं क्लास में। सही, या are there any birds in the zoo, कि क्या जू में कोई परिंदे हैं। So कोई को आप क्वेश्चन में how you are supposed to use it in a question। सही, फिर you are also asked about to describe the picture। Okay, then उसके बाद में क्या है कि nothing like there is a point of, ये इसमें फिर से आपने जो है ना there is का यूज इस्तेमाल की, सॉरी there is को यूज किया using different examples। Okay, there is nothing like, फिर उसमें there is के साथ nothing like to make even to complicate a sentence even more, किस तरह एक simple sentence को आप थोड़ा सा और complicate करके यूज कर सकते हैं। सही, okay. So yes, these were some of the activities that you did. Now we'll be coming towards today's lecture. Good. Okay. So okay. तो क्या है कि रिकॉर्डिंग तो थोड़ी सी हमारी हो गई। नाउ माय क्वेश्चन इज के is change something good or bad, and how have you changed throughout the years। कि क्या है कि आप लोग जो है ना, ये चेंज हर एक इंसान की जिंदगी में चेंज आता है, एवरीबडी चेंजेस थ्रू वन थिंग ऑन अनदर। सही, कि किसी न किसी तरीके से हम खुद भी बदलते हैं या हमारे इर्द गिर्द जो माहौल होता है, हालात वाकयात वो भी बदलते रहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो तब्दीली आती है, जो बदलाव आता है, इज इट समथिंग गुड और इज इट समथिंग बैड।
अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अच्छा, सर बासित का थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है। आई थिंक सर बासित, आर यू लाइव? Yes, आई थिंक यू हैव सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, दैट्स व्हाई can you hear me? the internet is off. Yes, I can hear you, but you can off your Nasir, video. If the internet is not good, you can off your video and start the class. Turn off your video right, and start actually, yeah. Okay, yes. Sorry about that. Just and share the screen, please. so yes, let me share the screen. तो जैसे शुरू में ही बात कर रहे थे, it is dark in here, right? So yes, let's continue the class. Okay, yes. So my question from you was, and kind लगता है कि is change something होती है, क्या है, कोई अच्छी चीज है, आपने खुद किस तरह चेंज फील किया है? Yes, okay, yes, Miss Musarat, I'll go with you. Take the lead. Kind of. Yes, Miss Musarat, can you hear me? जी, अभी आवाज आपकी आ रही है मेरी? Yes, Mrs. Ismail. Let me unmute you. हेलो अस्सलाम वालेकुम। Yes, Mrs. Ismail. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum जी सर, salam. am I audible? Walaikum salam. Yeah, you're audible. Yes sir. Sir, in my opinion, the change occurs in every part of the life as it time passes. A change in human behavior, thinking, and livelihood, resources, etc. If something get changed, it is helpful to other, so the change is very good. For example, a student in the class starts studying and get change from zero to hero, then it is a positive change and it is good. But if the change is negative and and others get in trouble for about that change, then it will be I must say the change is not good. For example, if a person doing help to poor people with his cash, and we can call him a sahi person, who can share his wealth to others. This is a positive sign. But if sometime at the time passes and he becomes miser and stop his sharing something to the others, so it change its negative, so it is not helpful to others. So I think the change will is it is it this change is not good for him or and for others also. As far as my life is concerned, Yeah, I yeah. yes, throughout the year there are very changes came in my life, in my routine, in my thinking, as well as time passes, as well as we get older, get experienced, or in the life experienced us in a bad way or in a right way. So I think we became more mature and more experienced by our mistakes and by our changing behaviors. So I think the change is both sides. It is good if the it is positive in change in for every person's life or thinking or behavior. Um, I think sir, it's very good. Yeah. Yes, sir, you're quite right. Change can sometimes be pleasant, and change can
Sometimes it is present as Sir well. Basit, It can hurt as well. So can that is Sir quite Basit, can you hear detailed. me? Yes, sir. Sorry for interrupt you. I want to share some like thought Yes, about yes, the sir. change. Yes, the change is very good in a life because as we know Yeah, very well that today we have the very busy schedule. Like the men's are doing the job from 9 to 6. They are stuck in that part, and the housewife is also struggling with their child. They do everything. They prepare the food for the man and they do all the things. Sometimes change is very good. You can see that the many entrepreneur and the business owner do the travel the various countries. Why they travel? Because when they travel the other countries, the other places, they go there and they explore all the things and they try to learn different things and get the ideas and then implement in the journey. Okay, so everyone, yeah. whether they are doing anything, the change is the very good. Take Sir, take the may I time for say? yourself. Uh, Yes, Sir, yes, may I say yes, something? yes. I am attending the class of English. And I have changed in my language also, so that I speak English in routine in my home. So I think it is a very positive and good change in my routine life after joining the College of English and this online class. Yes, so this is a very positive thing from all of you guys, and I want the participant from all of you guys because this is the part. This is the journey. This is our journey. Because when you are learning something, try to learn your children, your family, your friends member as well. It will be like good sign for both of you because when you are saying something in English, and it will be a learning for both of you. So this is the big change. I appreciate this answer. So, Sir Basit, please take the point of view from all the students about the change because this is the very big thing and the big important thing. Thank you, sir. Yes, I think Musarraf wants to add something as well. My pleasure. Thank you very much, sir. Yes, Miss Madam, Miss Musarraf. It's okay, Okay. fine. It's okay. We just started the class. Okay, sir. Sir, I have changed my life in when I step in practical life. When parents are something able to understand us, we don't feel, and otherwise we feel. And maybe we feel sad on them why they are understanding and why they are involving and why they are something banned on them. We don't understand on that life. We didn't understand, so sir. But now when I stepped on my practical life, I understood all the things and I have changed my life without any encouraging person, and I am now better understanding what the things are good and what the things are not good for us. And now I am counseling also my children as well very well because they are growing up and they are unable to understand what are the wrongs and what are the positives and what are the negatives for us. I also counseling very well, and now I am uh, and yeah, we should learn from them, but we quit our Yes. past. Yes, sir. We should learn from our past, but we must change ourselves in for futures for our present, and that's why I think it is a very positive sign. I have totally changed my life in my present, and I will totally change my life in future. That's Yeah. it, sir. Yes, good. So yes, so we have this one thing where we try to change our life. के एक तो ये होता है कि हम खुद ही अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं. The other thing is कि life changes us. तो इसमें भी जमीन आसमान का फर्क होता है. But trying to change your life on your own, I think that is the best thing you can or the best gift you can give to yourself. कि खुद के लिए ये सबसे बेहतरीन तोहफा होता है कि आप खुद ही अपनी जिंदगी बेहतरी के लिए बदल दें. Thank you very much, Ms. Musarraf, for this answer. Yes, Kamran Yusuf. Yes, Kamran.
Kindly give me your view about change. Is change good or something bad? Hello, sir. Yes, sir. Yes, Kamran, I can hear you. Change. How can we change our life? Yes, What आपने is the मतलब simply question, sir? just my question is change something good or bad? Or and how have you changed throughout the years? ये जो तब्दीली होती है हमारी जिंदगी में क्या है कोई अच्छी चीज है बुरी चीज है और आपने खुद में कैसी तब्दीली महसूस की है पिछले साल में अभी इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश इसलिए नहीं मैं बोल सकूंगा कि मैं पहले एक क्लास अटेंड किया, आज दूसरी कर रहा हूँ. I was out of city and I missed my all classes. हेलो. कोई इशू वाली बात नहीं कामरान, अगर आप नहीं ले रहे ट्राई टू स्पीक. 2 लफ्जों में बता दें कि चेंज, जैसे सर बासित ने आपसे पूछा है कि चेंज क्यों जरूरी है लाइफ में और उसको क्या रेट करते हैं, मतलब कि जैसे कि आप, जैसे आपको पता होगा कि हर बंदा अपने लाइफ में या प्रॉब्लम में फंस गया है, Change, तो इसको आप एक्सप्लेन कर change, दें इंग्लिश में. change is very important thing because of opportunities. Because of opportunities, very important. The change in life. yes If you Mhm. don't have change in your life, you don't get opportunities, and you don't understand the world, and don't understand other things in Mhm. your life. If you have many changes in your life, you better understand the world. Uh-huh. Yes, so Thank you. yes, okay, thank you very much. Yes, I need one more person. Muskan. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you doing, Muskan? I'm great, sir. Okay. सर आप पूछते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आया जी, you have to tell about change कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है. सर द चेंज इज वेरी गुड बट सर माय लाइफ इज नो चेंज एनी समवेयर Okay, I think you are a little too young to experience change, but yes, ma'am, Alexia, you want to say something? नहीं सर ऐसा तो कोई भी चेंज नहीं आया अच्छा, ना तो कोई एक्सपीरियंस है अच्छा. I hope you do experience some positive change in your life. Thank you very much, by the way. पॉजिटिव चेंज ये भी है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं. Exactly. Anything can be changed. Yes, thank you very much, Kamran. Okay. So yes, I'll be moving ahead now. और बाकी जिन लोगों से मैंने पूछा नहीं, I'll be giving them a chance as well. Right? So words about today. So today we have got a bit of British touch in our words. सही so आज के जो words हैं वो थोड़े British हैं इसमें से कुछ words ऐसे होंगे that might be new to you कि वो आपने कभी सुने नहीं होंगे सही so the first word is comprehend and I'm unmuting all of you so एक साथ जो है ना try to repeat after me yes so the first word is comprehend Comprehend. comprehend, comprehend, Comprehend. yes comprehend means comprehend, जी comprehend means to understand समझना किसी भी चीज को समझना so comprehending difficult situation can be complicated कि मुश्किल हालात को समझना कभी कभी पेचीदा हो जाता है सही the next word is pavement Payment. pavement, yes pavement Payment. means जी pavement means footpath तो जिस तरह होता है ना कि रोड के साइड पे जो फुटपाथ होता है तो उसके in British actually we call it pavement जी तो yes, so people were walking on the pavement by the roadside. कि लोग जो है ना फुटपाथ पे चल रहे थे सड़क के साथ जो फुटपाथ है उस पर चल रहे थे The next word अच्छा ये जितने words हैं सारे British words हैं it means कि
Britishers actually use these words. We also have American words, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने इस बार vocabulary में British words लिए हैं. So yes, the third word is brolly. Broly. 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 अब देखें brolly, what does brolly means? It means umbrella, छतरी. American English में क्या होता है? हम उसको simply we call it umbrella. उर्दू में छतरी कहते हैं, but in British English we call it brolly. Right? Broly. So yes, I can instruct you कि take a brolly with yourself. It is raining outside. कि अपने साथ छतरी ले जाएं, बाहर बारिश हो रही है. The next word is loo. 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 Yes, loo, Baitul Khala, yeah, we also call it refreshment room, yeah, we also call it toilet as well. तो या washroom, हम इसको washroom भी कहते हैं, toilet कहते हैं, and we also call it in American English, we also call it Johnny. तो इसको Johnny भी कहा जाता है American English में, while in British we call it loo. So yes, there was a queue of people outside the loo. कि वॉशरूम के बाहर बैतुल खला के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी. सही. ओके, द नेक्स्ट वर्ड जो कतार का लफ्ज मैंने यूज किया, क्यू. Q. Q. Yes, so in the previous sentence मैंने ये word भी use कर ली कि there was a long queue of people outside the loo. सही. So the next word is mate. Mate. Yes, mate means दोस्त. So ये अक्सर ब्रिटिशर्स जो होते हैं they use this word a lot. सही. खासकर so for someone they know or for their friends. Simply like how are you doing mate, कि आप किस तरह कर रहे हैं दोस्त, कि तुम किस तरह हो, कैसी है तबीयत, how are you doing, how are you feeling. Okay, the next word is chuffed. Chuffed, good. So chuffed means Soft. yes, I am feeling quite chuffed today. Soft. कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करूं. Yeah. The third last word is knackered. Knackered. Neck hard. Yes, knackered means थका हुआ. थका हुआ. So in American English we simply use the word tired. Okay, I'm tired today. We can also use it I'm knackered today. कि मैं बहुत थका हुआ हूँ. The second last word is chap. 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 Yes, I cannot hear everyone. मुझे हर एक की आवाज नहीं आ रही. बहुत सारे हैं हुआ. Yes, chap. Chap. means लड़का. Chap. Yes, he is a young chap for his age. कि वो अपनी उम्र में काफी जवान लड़का है. सही. And the last one, last word is tally. Tally. Tally, good. Tally means television. हम कहते हैं ना television या TV. So British call it television. Okay? There was a show going about 9/11 on the telly. कि 9/11 के हवाले से शो चल रहा था टेलीविजन पे, टीवी पर. Okay? So now as I need two people, जिसमें से एक बंदे ने क्या करना है कि एक ने सेंटेंस बनाना है using a question and using these words, while the other person will be answering the question. सही. So yes, kindly raise your hand whoever wants to participate. Yes, kindly raise your hand जिसने जो है ना participate करना है. So I might select two people. Okay, coming, चलिए मैं खुद ही select कर लेता हूँ. Fahim, first you and Chahat. Yes. So Fahim, ask a question and Chahat will be answering you using these words. Okay, चले. So, Mohibullah. Yes, Mohibullah. Wait, I'll be taking. Okay, Mr. Sarath, let me unmute you. Yes, thank you very much. Yes, Mr. Sarath, I'm fine. Kindly ask a question from Ms. Sarath and she'll be answering you. Okay. First, I have to ask the question. Fahim will be asking you the question. Okay. Why are you walking? Why are you walking on road? You should
use a pavement for walking. You know, it is danger for your uh, some जो Nusrat, I think जी asked me to Yes, Oh, me to ask question. I think. okay, it's okay, okay, it's okay. Chale Masarat, you have asked a question, or if you want to continue, Masarat, Chale Masarat will ask the question, and fine, you can answer the question. okay. Why are you walking on the road? You should use a pavement. Um, uh, you should pavement. What are you think about? What are you say about it? Hello, Yes, I am listening you are listening? and trying to Okay, make answer. okay, Actually, okay, okay. Take your time. yeah. First time I just saw this vocabulary. No, Mhm. yes, It's pavement okay, mean fine. It's footpath. actually, yes, it's actually the same vocabulary we use in daily life, but actually the words are only British instead of being American. So it's easy. Yeah. Okay, so I'm trying to walk on pavement, but the right. I mean, Uh, I have some sort of okay, coding. try to make it. Actually some water on the pavement. That's why uh, I thought maybe I will Okay, step on the yes, pavement. Mhm. yes. That's why I'm trying to run or walk on. You sorry to interrupt you, Fahim. You can say that in this way that I'm trying to walk on the pavement, but due to the lot of rush, I can't able to walk on the pavement on in perfect manner. You can say that Yes, in that type, and you can say this thing as well. That due to the due, due to the water on the pavement, so I can't enable to walk on the pavement in perfectly. Okay. right, sir. So you can try to create the sentence. Try to think about it. Take Mm, the like think in like 3 to 5 seconds, and then try to create the sentence in the scenario wise. Then you will able to make the perfect sentence. Okay. Don't okay, need to sir. worry about that. Okay. Right, Try again. I will try Try my again. Okay. So thank you very okay. much, both Sir, Fahim you can and ask me. Musarat. Yes, yes. Okay, So okay, I'll be taking two more people. So आप लोग को मैं बाकी activities में भी time दूंगा. We are gonna play some 2 to 3 role play activities today. Yes, thank you very much, both of you, Fahim and Musarat. Okay. Next, I'll be taking Munazza Irfan and Muskan. Yes, sir. जी सर. Ji, okay, so Muskan, you can ask a question from Munazza Irfan, and Munazza Irfan will be answering you. ओके Just सर. Miss Okay, sir. Ismail, after that, I'm going to take you. Ji, उन्हें करना. yes, Muskan. सर मैं करूँ सवाल. Ji, ask the question. फिर उसके बाद जो है ना Munazza Irfan will answer you. Yes. सर व्हाट इज योर फेवरेट मेक. What do you say? Yes. Okay, you can ask like this, Muskan, कि who is your favorite mate? कि आपका दोस्त कौन है? आपका अच्छा दोस्त कौन है? Yeah. My favorite way is my best friend for my school Okay, friend. good. Yes, now Munazza, I want you to ask a question from Muskan, and she'll be answering you. Okay, sir. Uh, uh, why are you? Where are you, Broly? Yes, दोबारा what is the बोलना. question? Where are your Broly? आपकी छतरी कहाँ है? Where is your body? Okay, good. Mhm.
सर इसका आंसर क्या करूं? वो आपकी छतरी कहाँ है? You have to tell her where your brolly is. आपने पता नहीं क्या आपकी छतरी कहाँ है? You can say it like this कि my brolly is in the room या my brolly is in the garage. इस तरह कह सकती है या Yes, sir. My brolly is in the car. okay, good. Okay, good. Thank you very much. Yes, so next I'll be taking Mrs. Ismail and yes, Sipranur. Yes, Sipranur, I Yes, want sir. you to, yes, I want you, सर मैं Sipranur, खुद I want, Yes, sir. जी, सर मैं खुद से बना लूं कुछ कोई सेंटेंस? yes, but आपने क्या करना है? You have to use these words. Sentence खुद से बनाए, but you have to use these words. ओके सर, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंड का बनाती हूँ. आई थिंक सो मैथ्स क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. Good. आई But यूज you, ब्रॉली फॉर yes, रेन. yes, sorry to interrupt you, लेकिन आपने क्या करना है? Question पूछना है, जिसका आंसर मिसेस इस्माइल देंगी, सही? सर मैं आंसर दे दूं? क्वेश्चन थोड़ा Okay, डिफिकल्ट चलिए. लगता है. Okay, चलिए, Mrs. Ismail will ask you a question. Yes, Mrs. Ismail. Yes. My question is it easy to comprehend for you to understand the British accent? Right now we are listening. Is this comprehend? I think so. It is a bit comprehend for it is a bit difficult for comprehend British language. It is difficult for you to comprehend. Why? You are listening, you are understanding. It means that it is easy to comprehend for you, not difficult. If you are if you understand and replying me, it means that you can comprehend this. Because it is a Am I bit right? difficult. Yes, you are right. Okay. Yes, okay. So next I want to make the sentence. Yes, I yes, for that, but for that, kindly wait a minute. Let me just select Nusrat here. Okay, Miss sir. Nusrat. Yes, you can ask her the question. Yes, Miss Nusrat. Sir, I have to ask question or I have to give answer. Mrs. Ismail will ask we you can yes sir, we Yes, can you can communicate we as can well. communicate. Okay, Yeah, yes. yeah. Okay, okay. I have also question and I also using the as a sentence. Okay, good. आप दोनों ऐसे कर सकती हैं कि जैसे शुरू से लेके ना एंड तक के ना सारे वर्ड के एक सेंटेंस बनाते रहें और उस पर बात करते करते आके इसको एंड करते हैं आप दोनों, ठीक है? Yes sir, yes sir, Okay. yes sir. Okay, ask Mr. Ismail or you ask? Yes, Miss Nusrat, is it easy to comprehend for you to understand the British accent? Yes, it is very comprehend to understand the British accent because the sir is guiding us very well and they narrate very well. That's why we are feeling easy in these British native words. Yes. It is raining here. You must walk on the pavement and also use brolly. Okay, Do you have? I have yes, I have taken a brolly because it is raining outside and if we have a brolly, it will be easy for purchasing something or doing something. Yes, of course, of course. Okay. What Okay. did you? What Is there? Yes. why did you break the queue? What is that? What that reason? Because the civilized person always make queues for in the public places, and it looks very nice. Okay, now tell me, is there any loo near here around the market? Yes, there are loon near the markets. You can go to the right corner and it will be available easily. Oh, thank you, thank you. Are you living? Do you live single or share your hostel rooms with you? Sorry.
I'm asking you that do you live single room? Do you live in a single room, or you share your room with your with your mates? I shared. I'm not living single here. I shared my room with the mates because of inflation. Because I do not afford. I cannot afford. That's why Okay. I shared my room with mates. Okay, Miss Musarat is it's very shuffled for us, Yes, yes. shuffed for us to talking to you. Yes, yeah, absolutely. I always say same to you. Thank you, thank Same you. to But you. it is very Yes. knackered all the day. We are working, and mm, Yes. do We. you watch telly? Do you watch telly? Yes, I watch television sometime, but I don't have any time to watch telly. Yes, of course. It's Yeah, because okay, sir. Kindly pronounce the word chuffed or chat, chuffed. chat, What is this? chat. Chap. Chuffed. Yeah. Okay, okay. Chap, this is Mm, chap. okay. Sir, is this okay? Yes, the Chat. pronunciation is chap. Chuffed. Okay, okay. Thanks. Yes. Do you have a Thank you, chat? Miss Musarat. Okay, do you have a chat? Okay, Hello. okay. Yes, okay. Thank you very much. I guess for now this is enough. Yes, Mr. Yes, ma'am. If you want to say something. Okay, it was a nice conversation between Mrs. Ismail and Mrs. Musharraf. Thank you very much, both of you. Okay, so now we'll be moving ahead for today's lecture. Okay, there are some phrases as well. Sorry, I forgot about this part. चलिए तो phrases के बारे में थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं. So the first phrase is fighting like cats and dogs. मतलब कि इवन हम उर्दू में भी यूज करते हैं कि क्या मतलब जब कोई छोटे बच्चे लड़ते हैं या दो लोग आपस में लड़ते हैं वी एक्चुअली से उर्दू के क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो हम अक्सर यूज करते हैं ना सो इट मीन्स कि why are you fighting much with so much intense with so much of intensity कि आप क्यों इतनी शिद्दत से लड़ रहे हैं so fighting like cats and dogs means शिद्दत से लड़ना both students were fighting like cats and dogs दोनों तलबा शदीद लड़ रहे थे शिद्दत से लड़ रहे थे बहुत ज्यादा लड़ रहे थे. Okay, the next one is to have a card up someone's sleeve. मतलब कि एक खुफिया मंसूबा होना सही so they can defeat us for I have a card up my sleeve. वो हमें शिकस्त नहीं दे सकते वो हमें हरा नहीं दे सकते हरा नहीं सकते क्योंकि मेरे पास एक खुफिया मंसूबा है या मेरे पास एक खुफिया प्लान है. Okay, the third one is he was like a scaredy cat. Scaredy cat means डरा हुआ. सही. He was like a scaredy cat upon seeing his father. वो अपने वालिद को देखकर जैसे डर सा गया था. वो अपने वालिद को देखकर डर गया था. The next one is black and blue. Black and blue का मतलब ये है कि जख्मों में लेना. ये अक्सर इस तरह होता है ना कि when we are actually beaten हम किसी चीज से लग जाते हैं कोई जगह हमारी बॉडी की लग जाती है तो क्या हो जाती है वो या अक्सर ग्रीन हो जाती है या इधर टर्न्स आउट ब्लू तो क्या हो जाती है वो ब्लूइश या ग्रीनिश जो हो जाती है दैट इज कॉल्ड बिकमिंग ब्लैक एंड ब्लू मतलब कोई चीज सख्त तरीके से लगना. सो देयर फाइट मेड देम ऑल ब्लैक एंड ब्लू कि उनकी लड़ाई ने उन्हें जख्मों में ढांप लिया था. The other one is a red flag. Yes, Mr. Ismail, let me just unmute you first. Yes, Mr. Ismail. Yes, sir. You said that I have a no. What is this? Black and blue. We use this phrase only for the injuries or for blood and something, or we can use this phrase for other sentence. We only use it if As I make a sentence, Mhm. sir. As I use this in my sentence, the rain made them all black and blue. Is this okay? Is this right or wrong? Can you repeat your sentence again? जी क्या आप फिर से कह सकती है क्या जुमला था आपका?
The rain made them all black and blue. नहीं, we actually specifically use it for injuries. मतलब या Injuries. थोड़ा बहुत खून बह रहा हो या बंदा जो है ना लग जाता है तो Okay, उसकी okay, sir, sir. we only use it for injuries. Thank you very much. Okay, sir. Yes. So the next is red flag. Red flag का मतलब ये है कि वो बंदा जिसको आप क्या महसूस करते हैं खतरे की घंटी, someone who feels like खतरे की घंटी. So to that person you call red flag. The girl's attitude is a big red flag. कि उस लड़की का रवैया खतरे की घंटी है. The next one is behind bars. Behind bars का मतलब कि सलाखों के पीछे होना. The thief was behind bars for 4 years. के चोर जो है ना वो 4 साल के लिए सलाखों के पीछे था. To love someone to death. Loving someone to death का मतलब कि किसी से बेतहाशा मोहब्बत करना. I love my parents to death. कि मैं अपने वालिदैन से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ या बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. Food for thought. Food for thought means फिक्र की रजा होना, सोच की रजा होना, या anything that makes you think. कि कोई भी चीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे उसे कहते हैं food for thought. So philosophical questions can be food for thought. कि फलसफियाना सवाल जो होते हैं ना वो ग़िज़ा की वो फिक्र की ग़िज़ा हो सकते हैं. The next one is for all I care. कि मतलब कि मुझे परवाह नहीं है. She can go to hell for all I care. कि वो जहन्नम जा सकती है, मुझे परवाह नहीं है, मैं परवाह नहीं करता, वो चाहे जहन्नम जाए या जन्नत जाए या मतलब उसका जो भी होता हो, I don't care. For all I care का simply means कि I do not care. And the last one is to get into deep waters. मतलब ये है कि परेशानी में पड़ जाना या बहुत ज्यादा बुरे हालात में पड़ जाना. आई एम गोना गेट इन डीप वाटर्स फॉर ब्रेकिंग द डोर. कि दरवाजा तोड़ने की वजह से मैं बड़ी परेशानी में पड़ जाऊंगा. राइट. So now for this activity I'll be taking a single individual, okay, who can use any one of these phrases in their own sentence. Yes, so kindly raise your hand. Yes, Rehan Khan. Okay, sir, Banu, thank you very much. Yes. Okay, sir. I was used to first phrase. Mm-hmm. Yeah. Both friends were fighting like cats and dog. She was behind the bar because she was murder my brother. Okay, good. I love my siblings. I love my siblings to death. Good, great. Yes. So thank you very much, Sibanu. Those were some creative sentences. Yes, Mrs. Ismail. Let me unmute you. Yes. So kindly check my sentences. I have made all of them. First one is both soldiers and enemies were fighting like cats and dogs. Good. Is this okay? Yeah. The students can do cheating in exam. I have a card up my sleeves. Card up my sleeve. So ये क्या मतलब बनता है इसका? Could you explain it? Students can do cheating. यानी student cheating नहीं कर सकते in exam में. I have a card up my sleeve. यानी मेरे पास कोई खुफिया plan है. So you can say it like this. Students cannot cheat in exam because I have a card up my sleeve. Yes. Good. Because okay, sir. Because Ariba was like a scaredy cat upon seeing a horror scene of the movie. Good. The rain made them all black and blue. ये तो आपने बता दिया कि गलत होगा. ठीक है. The heavy all day rain is a big red flag. The heavy all day rain is a big red flag. And the murderer was behind bars for the killing an innocent person or innocent citizen. Yeah. I love my teaching profession to death. Okay, great. Okay. The salah is the food for the thought and soul. Okay, great. She takes sweet and can cause diabetes for all I care. Okay, great. Okay. He's gonna get up deep water if he fails in the final exam. Yes. He's gonna get in deep water.
Is this Okay, okay? thank Okay, yeah, sir. yeah, it's good. Thank It's you. good. Thank you. Fine, fine, yes. Yes, fine. Kindly, could you make a sentence? Sir, I need to repeat the same, or You can use your own sentence. You have to just use these phrases, but you have to make your own sentence. try to make my own words. Okay, sir. Yeah. Uh, That's fine. the boys were fighting like cats and dogs. Yeah. They can defeat us for uh, they can't defeat us for I have a card up my sleeve. They can defeat. They can't defeat us for I have a card up my sleeve. Okay, great, great. Yes, make one more sentence. Just one more, yes, because we are also running short on time. I love my parents to death. Okay, great. Could you change this sentence to your own? Sorry, sir. मतलब खुद से इसका एक और जुमला बना सकते हैं to love someone to death का. जी fine. ओके शाहीन, थैंक यू वेरी मच फाइन. सॉरी, और बाकी जितनों का अभी मैंने नाम नहीं लिया, I'll be selecting them in the next activity. ओके, एक्चुअली ये वाली जो वीडियो है ये हम ऑलरेडी वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस क्लास इफ यू रिमेंबर. जिसके वजह से मैंने आप सब लोगों से क्वेश्चन भी किए थे, सही है, कि वो जो इंग्लिश विद लूसी, जो लूसी लड़की का नाम था, हु इज टेलिंग अबाउट हर ओन इंग्लिश कोर्स, सही सही वही वीडियो है. यस, सो कैन यू टेल मी एनीवन व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप लोगों ने कोई से दो पॉइंट्स बताने, फॉर एग्जांपल लाइक आई कैन से कि ऑन नंबर 8 देयर इज अ टीवी, on number 13 there is a window. So इस तरह करके there is करके you have to use the structure. Okay, so yes, for this activity I'll be using Asal Sultan. Yes. Number is 22. Yeah. There is table in the room. Yes, exactly, there is a table on number 22. Yes. One more number. A number is 24. Yes, on 24 what is there? There is a lamp. Exactly, good, thank you very much. There is a lamp. Okay, yes. Satwanudar and Ms. Musarat, मैं आप लोग को भी select करूँगा, but let me choose others first. Yes, Rehan. Okay, Chani, Ms. Musarat, kindly choose any two numbers and tell us what is there in the room. Okay. I will choose a number 8. There is a TV. There is a TV, and the boy is watching TV. Yeah, good. And I will go for 13 number.
13 number, there is a window, and I am and there is a window, and some trees and plants are behind the window. Okay, good. Thank you very much. Yes, Muskan, kindly choose any two number and tell me what is in this picture. Okay, sir. Yeah. At number 14, there is sofa. Mhm. And number 11, number 10, there is a wall in the room. Okay, there is a wall in the room. Good. Thank you very much. Yes, and Munazar Irfan. Yes. Yes, sir. So I take am any two taking number. the Yeah. number 19. There is a cushion, Mhm. and on the number uh, on the number 20, there is a sofa. The girl is sitting with the sofa. Mhm. Okay, good. And Thank you, sir. yes. Okay, Sibanu. Okay, sir. Number 29, there is a sofa. Number 13, there is a window. And number 20, there is a girl sitting in the sofa. Number 19, Okay. there is a pillow. Number 22, Mhm. there is a book is on the table. Okay, good. Yes, good. Thank you very much. Thank you very much. Ready? So this was a bit of a recalling from the previous lecture. ओके अभी जो है ना अभी का स्ट्रक्चर इट इज द सेम जिस तरह की पिछली क्लास में आप लोगों ने स्ट्रक्चर सीखा था ना देयर इज वाला जो अभी हमने रिपीट भी करिए तो आज का स्ट्रक्चर भी इट इज क्वाइट मच द सेम फर्क क्या है कि उसमें जो है ना हमारे पास ऐसे फ्रेजेस लगे हैं which indicate that we are talking about the past. For example, ये जो green में जितने लिखे गए ना कि last evening, 2 weeks ago, last night, yesterday, this morning, in the past, तो इससे हमें ये जाहिर किया जा रहा है कि बात जो है ना माजी के बारे में की जा रही है. For example, there was, we use was to introduce singular noun and we use were to introduce plural noun. For example, there was a girl under the tree last evening. तो दरख्त के नीचे पिछली शाम एक लड़की थी. There were some bodies floating on the river 2 weeks ago. कि 2 हफ्ते पहले दरिया में कुछ बॉडीज तैर रही थी, डेड बॉडीज तैर रही थी. सही. So the activity is like this. Okay, let me give you a few examples more. There was a man disturbing the public in the bus stand this morning. कि एक आदमी था जो क्या कर रहा था पब्लिक को आवाम को बस स्टैंड पे तंग कर रहा था इस सुबह. सही. दिस मॉर्निंग. अब दिस मॉर्निंग क्या है कि जिक्र आज का हो रहा है लेकिन ये गुजरा हुआ वक्त है. सही. So and there were many people fighting for the nation in the past. कि माजी में बहुत सारे लोग अपनी कौम के लिए लड़ रहे थे. सही. So आपने क्या करना है? You have to either use their was for singular or their were for plural. So, और उसके साथ you also have to use such a phrase that indicates the past. कि उससे पता चले कि past के बारे में बात की जा रही है. सही. So now you can see कि क्या है यहाँ पर. We are given two pictures. कि my village now and my village in 90s in the past. कि मेरा गांव जो है ना अभी किस तरह है. सही. और मेरा गांव पहले किस तरह हुआ करता था. So the first activity about the now. Actually, this is one similar activity. लेकिन इसमें in one activity we are using present, while the other activity we are using the past. और हमने करना क्या है? पहली activity में हमने there is और there are का यूज करना है to tell about the now. और second जो है ना इसके साथ second image में we have to use there was या there were. सही. जिस तरह के यहाँ इस्तेमाल किया गया कि there are many story buildings in my village now. कि अभी मेरे गांव में क्या है बहुत ज्यादा स्टोरी मतलब बहुत ज्यादा उसके घर हैं छतों के घर हैं स्टोरी की बिल्डिंग्स हैं. लेकिन क्या है कि there were several thatched houses in 90s. thatched houses मतलब कि ये उसकी जो होते हैं एक छत वाले जो घर होते हैं. सही है. thatched houses के 90s में 1990 के वक्तों में दौर में मेरे गांव में क्या हुआ करते थे. घर हुआ करते थे. एक छत के घर हुआ करते थे. There are three schools while there was a central school. कि अभी 3 स्कूल है मेरे गांव में जबकि पहले क्या हुआ करते थे सिर्फ एक ही स्कूल हुआ करता था. सही. So आपने क्या करना है इस तरह करके you have to tell 3 to 4 points
about your own village, सही है, जो जिसमें आपने बताना है कि अभी आपके गांव में what has changed, हमने शुरू में चेंज के बारे में पढ़ा ना, so you have to tell कि what has changed now and how it used to be in the past, कि अब ये किस तरह चेंज हुआ, क्या क्या चीजें अभी आपके गांव में और माजी में क्या क्या हुआ करता था. So for this activity I'll be taking yes मुनज़्ज़ा इरफान. Yes, sir. जी. Uh, You have to just tell it into 3 to 4 sentences, not more. okay, sir. Uh, Yeah. there are some cars in now village, Mhm. and there was no cars in 19th village, Okay, good. and uh, 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 there uh, there uh, there is a very big building in now village, and there Mhm. are no buildings. Yes, sir. There were अब ऐसे कैसे थी कि there are many buildings in my village now, but there were no buildings in the past. Yes, sir. Yeah. Okay, and uh, there are uh, there are there are uh, there are और नहीं आ रहे. You can try your best. Uh, there are some results from which I cannot hear you properly, Mirza. yes, sir. आवाज आप क्लियर नहीं आ रही मुझे. सर खंबे की इंग्लिश क्या होगी? किसकी? ये जो खंबे होते हैं उनकी. हेलो. Yes, yes, I can hear you. जी. सर ये माई विलेज में वो लगे हुए हैं खंबे टाइप. एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं. और सर Okay, it's there okay. are there Yeah, are yeah. जी जी, carry on. there are some roads on my village, while there are no roads but 19th village. Okay, good, good. Thank you very much. Yes, so next one I'll be taking Fahim Raza. Yes, Fahim. I hope you got the activity कि आपने करना किस तरह है, what do you have to say? Fahim, okay. Fahim, can you hear me? Yes, Fahim. Yes, sir. Sir, I'm hear you, but I am facing internet connection problem here. Okay, Uh, okay. so Mhm. I don't have today my hands free, so I'm not able to listen you clearly. So that's Okay, why. चले, or it's okay, it's okay. I, So yes, but जी, you but I want to want take, I yeah, want yeah. to I want to part in this activity. Yes, yes, carry on, Fahim. Sir, can you please guide me little bit? इस एक्टिविटी में यस फाइन, इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपको दो पिक्चर्स दी गई ना. लेफ्ट साइड पे एक गांव के बारे में बताया गया है कि किस तरह गांव में चेंजेस आ गए हैं, और राइट साइड में आपने अपने गांव के बारे में बताना है कि पहले मेरा गांव कैसे हुआ करता था. तो मतलब इन द फर्स्ट एक्टिविटी यू हैव टू यूज देयर इज या देयर आर, व्हाइल द सेकंड एक्टिविटी यू हैव टू यूज देयर वाज या देयर वर, कि मेरा गांव अब इस तरह हो गया है जबकि पहले मेरे गांव में ये चीज होती थी. सही, जस्ट लाइक दिस. Okay, sir. यस. There was a central school. Mhm. Now there are 3 schools.
इस तरह, बट यू हैव टू क्या करना है, अपने अपने गांव के बारे में बताना, so you don't have to use these sentences. Okay, sir. Right. Uh, Yes. there were not many vehicles now in my village in the past in 90s, but now there are many vehicles in my village. Okay, yes, and this word is vehicle, say gadi. Good. In the village, sir. Ji. Sorry, sir. Vehicle, the word is vehicle. Sir, I'm sorry, I'm not listening you clearly. The word is vehicle. Vehicle matlab gadi. Okay, yes, okay, but I think fine. Thank you very much. You took the participation, and I think that is what counts. So yes, I need two more people for this activity now. The next one will be Muskan. जी सर. Yes, Muskan. तो आपको आइडिया है कि आपने करना क्या है इसमें? सर मुझे दो दो सेंटेंस बनाने हैं, एक तो पास्ट पे Exactly. तो 3 sentences total बना लें, सही है? About your village. ओके सर मैं बनाऊं. Yeah, there go on. there were no car in my village and there were no tele in my village. Yes, so now you can see that there are many cars in my village. Okay, many car in village and there was many tele in my village and Yes. there are many artificial bike for my city. Yes. In my village, you can say. Okay, sir. Yes, and what about the past? सर उसमें से ये बनाए थे ना देयर वेयर वाले. तो आपने इसमें करना क्या इस तरह की? There were many cars in my there are many cars in my city, but there were no cars sorry in my village, but there were no cars in the past. अभी बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं मेरे गांव में, लेकिन पहले बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं हुआ करती थी. Okay, sir. Yeah. So kindly make one more sentence. सर दोबारा बनाऊं? कोई एक सेंटेंस, एक और. Okay, sir. There were many tellies, but no tellies in my past in village. क्या मतलब? सर अभी तो बहुत सी टीवी है हर घर में, लेकिन पहले मेरे गांव Yes, में. there were many changes. Good, good. Oh, thank you very much, Muskan. You are showing Thank great effort. I really appreciate it. Thank you. Okay, yes, sir, Miss Musara. जी सर. जी. There were mud house in 19 in my village, and now there are many skyscrapers in my village. Good. Skyscrapers mean ऊंची जो buildings होती हैं वो वाली. Yes, exactly. Yeah. Okay. There were few schools in 19s, and now there are many schools in now in my village. And there were not any hospital in my village, and now there are many hospitals in my village. There were not a corporate road. There were not. There were rough and tough roads in my village, and now there are many carpeted road in my village. Good, good. Thank you very much. Yes, sir. Shall I make more?
But I think that's more than enough. Okay, okay, Yes, it will be enough. yeah. Okay. Okay, thank you. So I need one more person for this activity, then we'll be moving on. Yes, Sandesh, you want to add something? Yes, Silvanu, thank you very much. Sir, there were no story buildings in 19th, but there are many story buildings in my village now. There was a central schools in 19th, but there are many schools in my village. There there were not many vehicles in 19th, but there are many vehicles in my village now. Okay, okay. Good, thank you very much. Yes, Sandesh, I'm glad you're taking part here as well. Yes, Sandesh. There are more than people. There are no one people in my village now. There were there were more people in my village in 90s in the past. Very good. Yes, one more sentence, Sandesh. Okay, thank you very, that's more than enough. Thank you very much. So in this activity, we actually हमने क्या किया कि we compare the present with the past. And the next activity, you can actually also use the was not or were not. Negative भी हम use करते हैं. वो किस तरह के there was not plus बाकी जो आपका sentence structure होता है या there wasn't. सही same goes for there were not या there weren't. For example, there wasn't a railway station in my village 5 years ago. सही कि मेरे गांव में रेलवे स्टेशन 5 साल पहले नहीं था. सही but there weren't skyscraper buildings 100 years ago. 100 साल पहले skyscraper buildings नहीं थी कि लंबी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी. And as usual के was हम किससे use करते हैं for the singular while we use were for the plural. Okay, and you can also ask a question कि yes जिसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं कि yes there was या no there wasn't या yes there were or no there weren't. So was there a railway station in my village 5 years ago कि क्या मेरे गांव में 5 साल पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था. No, there wasn't any railway station in my village 5 years ago. कि 5 साल पहले मेरे गांव में किसी किस्म का रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था. या we can also say yes there was a railway station in my village 5 years ago कि 5 साल पहले मेरे गांव में रेलवे स्टेशन हुआ करता था. So for the negative, जिस तरह आपने is not or there is not or yeah there isn't and there are not there aren't वो structure यूज किया था ना. This structure is actually the same. सिर्फ फर्क क्या है कि इसकी जगह was लग गया और are की जगह were लग गया. The rest of the structure is the same. Yes. So time for another activity now. इसमें आपने क्या करना है कि 50 years ago there was electricity but there was अच्छा ये sorry इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि 50 years ago there was इसको क्या कहते हैं sorry I forgot the word. Yes there was a horse cart but there wasn't a car. तो 50 साल पहले बगी घोड़ा और उसकी बगी हुआ करती थी सही. लेकिन अभी जो है ना 50 साल बाद अभी वो नहीं है. सॉरी 50 साल पहले गाड़ियां नहीं हुआ करती थी. तो आपने इसमें ये बताना है कि पहले क्या हुआ करता था और क्या हुआ नहीं करता. सही. सो यू आर एक्चुअली यूजिंग both the positive and the negative structure. Yes. For this activity, I'll be going with you, Mrs. Ismail. Yes, Mrs. Ismail. Okay, so Sandesh. Yes, Sandesh. 50 years ago, there was honest person, but there was honest person in this world, but there was not honest person in this world. अच्छा आपने इस तरह करना है समझ. देखिए गुड सेंटेंस दो लेकिन यूज इस तरह करना है कि 50 years ago there was an honest person but there wasn't a liar. सही. या there wasn't a traitor कि एक ऑनेस्ट इंसान तो हुआ करता था लेकिन कोई धोखेबाज नहीं हुआ करता था. यू हैव टू यूज ईदर द ऑपोजिट. एक में बताना है कि कौन सी चीज हुआ करती थी और दूसरे में कि कौन सी चीज नहीं हुआ करती थी. सही. So let's try to make the sentence in Urdu and then translate it into English. Yes, Muskan. This Yes, Muskan. Can you try your best?
सर आ नहीं रहा है कोई भी। चलिए आप दूसरों की एग्जांपल सुनने, मैं फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, सही? Yes, sir. Yes, Mrs. Ismail, let me unmute you. Yeah, go on. 200 years ago. Yes, sir. Sir, I can say there were 20 years ago, there were rivers, but not bridges. But there wasn't bridge. And in 2000, there were CDs player or CD players, but not smartphones. But there weren't smartphones. And in my childhood, there was a horse cart, but there wasn't what can we say? What can we say, sir? Mercedes or something. Yes, good. Mm. Yes. 2000 years ago, there were humans, but there weren't facilities. Luxurious life. Okay. So am I right? Yeah. There are facilities, but not luxurious, right? We can say yes. Munazza Irfan, yes. Yes, Munazza. Okay. Then Ms. Musarraf, can you make sentence? 50 years ago, there was a cart for traveling, but there was not nowadays. Okay, good. And second one, in 2000, there were in 2000 there were many there. Just wait, sir. In 2000, there were सर वो क्या बोलेंगे सर, जो हॉलिस चीजें हुआ करती थी, जो हॉलिस चीजें प्योर. They were pure, yes, they were pure. Okay, in 2000 we received pure things, but there weren't nowadays. In my childhood, there was in my childhood there was in my childhood there was क्या इसको कहें सर, इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में जो है वो हुआ करता था जी, बट जी इन माई चाइल्डहुड in my childhood there was not automatic toys, but there wasn't. Actually, you can say that there were, in my childhood, there were manual toys, but there जी, manual. जी. Yes, sir. In my childhood, there was a manual toys, and but there wasn't a manual. Yeah, there were automatic. Yeah, there were automatic toys. Okay. 2000 years ago, there were in 2000 years ago, there were many rivers, just many rivers, and but there weren't no bridges. Yes, there were many rivers, but there were no bridges. Good. In 1990. In 1995, there was CD and DVD players. There was a CD players, but there wasn't DVD players. There were CD players, but not DVD players. Yes. Okay, it's complete, sir. Yes, thank you very much. So, and Fahim.
That's fine. Okay, Rehan. Okay, चलिए, we'll be moving towards the next part. There will be. सही. So ये क्या है? These sentences are quite the same, but here हमें क्या बताया जा रहा है? We are being told about the future. सही. कि फ्यूचर में जो है ना, हाउ यू आर सपोज टू टेल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्यूचर. अब तक जो है ना हम क्या यूज करते थे? देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर. सही. सो देयर इज एंड देयर आर अबाउट द प्रेजेंट, देयर वाज एंड देयर वर अबाउट द पास्ट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कि देयर विल बी. सही. देयर विल बी फॉर द प्रेजेंट किस तरह होगा कि देयर विल बी प्लस बाकी आपका जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है. और ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं कि फ्यूचर फ्रेज भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं ना, नेक्स्ट संडे 26 अक्टूबर, दिस इवनिंग, इन द फ्यूचर, टुनाइट, हियर आफ्टर, आफ्टर दिस कोर्स, इन 50 years. तो क्या है कि these are actually some of the phrases that show that you're talking about the future. कि जो जो ये बता रहे होते हैं phrases कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. There will be new project next Sunday. कि अगले संडे नया प्रोजेक्ट होगा. There will be a cricket match on 26th October. 26 अक्टूबर को एक मैच होगा. There will be rain this evening. कि इस शाम को या आज की शाम क्या होगी? बारिश होगी. तो जो गा गी गे ये मैं यूज कर रहा हूँ ना, सो मैं क्या बता रहा हूँ? फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ. और आप नेगेटिव इसका कैसे यूज कर सकते हैं? There will not be या there won't be. There won't be ethnic war in the future. सही. कि नस्ल के नाम पर जंग नहीं होगी आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में. There won't be rice and curry for dinner tonight. कि आज रात में खाने में चावल और करी नहीं होगी. There won't be any problem with your friend hereafter. कि आज के बाद तुम्हारे दोस्त के साथ किसी किस्म का मसला नहीं होगा. सही. So it is quite much the same and it is easier. इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है. सही. But you have to use, instead of using is and are, is, are या was, were, you have to simply use there will be. सही. Let me check. Okay, please. Okay. क्वेश्चन भी आप किस तरह बना सकते हैं? वेल, चलिए क्वेश्चन की तरफ बाद में आ जाएंगे. इसके हवाले से थोड़ी सी एक्टिविटीज कर लेंगे. सो वन पर्सन विल हैव टू, चलिए वो भी बाद में. आप क्या करें कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज के लिए ले लेते हैं, फिर बाकी जो है ना क्वेश्चन और नेगेटिव की एक्टिविटी वो नेक्स्ट उसमें करेंगे, पैनल में करेंगे. यस. सो विल बी मेकिंग सेंटेंस हियर इंडिविजुअली. यस. सिमगानूर. ओके सर. सर कोई भी बना ले. कोई भी, बट यू हैव टू यूज योर ओन सेंटेंस. देयर विल बी, उसको आपने फिर नेगेटिव में भी चेंज करना है. ओके सर. There will be the physics class this evening. Good. There will not be the physics class this evening. Okay, उसके good. बाद है there will be won the match on 30 October. Good. There will not be won जी. a cricket match on 30 October. Okay, there will be one. चलिए, good. Yes. ये थोड़ा सा इस सेंटेंस में इशू है. चलिए, इट्स ओके फॉर नाउ. जी. So one more sentence is what. सर कोई भी. जी जी. Anyway. ओके सर. सर ये won't है, won't be. Won't be, will not be के लिए यूज होता है ये. ओके सर. There will not be. There will not be any problem this subject after this course. Yes. सही है सर. जी जी, सही है, सही है. चलिए, थैंक यू वेरी मच सिबा. Fahim, can you hear me now? Yes, sir. I hear you, but this चलिए, I सही है, सही है. listen, सॉरी. I'm हाँ, not आपका able to इंटरनेट speak. इशू है. जी. तो Actually,
जी जी, इट्स ओके चलिए, आई एक्चुअली फॉरगॉट इट कि आपने मुझे बताया था। चलिए मिसेस इस्माइल, यू टेक द लीड। Yes, sir. यस Sir, my sentence is there will be a human colonies on other Mars after 50 years, and there will be AI technology replacement of human resource after 50 years or 30 years. There will be a debate competition on upcoming Saturday, and there will be a birthday party celebration on 20th May. जी जी। There will be a friendly cricket match um, on this Friday. हम्म, And sir, okay, hope good. so is Yeah, okay, yes, sir. you can also use the negative. Uh, the negative will be uh, there won't be any quarrel between the students among the students in the class. There won't be a rain in upcoming week. There won't be any rain in on upcoming week, and there won't be any patient after this treatment next day. Okay, good. Thank you very Okay, much. sir. Thank you. Yes, so yes. So going towards the next activity, उसमें फिर क्वेश्चन वाला थोड़ा सा मैं आप लोग को गाइड कर दूं। उसके बाद you can also use the question and one will have to ask the question and the other will have to answer it either in negative or in positive. सही? So क्वेश्चन का क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, नॉट दैट मच ट्रिकी टू। इसमें विल क्या है, यू स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब विल देयर बी टेक डेवलपमेंट इन 10 इयर्स। सो विल देयर बी आपने इस तरह क्वेश्चन करना होता है, सही है। उसमें तो इस तरह करते हैं ना पहले हम कि देयर विल बी, बट हियर इंस्टेड वी स्टार्ट द सेंटेंस विद विल देयर बी टेक डेवलपमेंट इन 10 इयर्स, कि क्या अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी। विल देयर बी अ मूवी सेशन इन द इवनिंग, कि क्या शाम को कोई मूवी लगेगी। विल देयर बी एनी बॉयज विद कैजुअल ड्रेस टुमारो, या विल देयर बी रेन फॉर नेक्स्ट 2 days, या विल देयर बी अ फेयरवेल इवेंट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, सही। So now what you have to do, Ms. Sarat, you have to ask a question and Munazza Irfan, yes, you will have to answer it either with yes there will be Yes, and sir. no there won't be. Say yes, Ms. Musal. Ask Okay, two sir. questions and she will have to Munazza will have to answer two questions. Two questions. From your side. Yeah, only two. Okay. Okay. Manaza Irfan, will there be start new classes after this session? Yes, there will be after my class this section. Okay. Will there be will there be will there be a movie will there okay, will there be some students come come in casual dress in school tomorrow? Yes. Uh, Will there be uh, some students no, come in casual dress tomorrow? Yes. Ms. Musal, you can ask it like this no, case. Will there be any students coming in dress tomorrow? Okay. Good, good. okay. Will there be any students come in school tomorrow? No, there won't be the students tomorrow. Okay. Will there be expected rain in the next 2 hours? Yes, there will be. I expected the rain next week. Okay. Okay. Yes, okay, I think that is enough. Thank you very much. Yes, Muskan and Sandesh. Muskan, you have to ask the question and Sandesh will be answering those questions. Say?
जी सर। जी यस सर संदेश कैन यू सवाल हियर कौन मी? करेगा? जी आपने मुस्कान सवाल करने विल देयर बी एक स्ट्रक्चर से एंड संदेश या कोई भी दूसरा बंदा है चले आई विल बी टेकिंग सिबगानूर हियर कि you will have to Sebganur, you will have to answer those questions. Okay. Will there be your father went to Islamabad on Sunday? Yes, my father will be come in Islamabad Sunday. Yes, अच्छा. And by the way, one important thing is कि जब आप verb को use करते हैं कि will your you can ask like this मुस्कान कि will your father be going? सही. तो सिर्फ you can answer it like this कि yes my father will be coming. हम Okay, be के sir. बाद ing form लगाते हैं verb की. जी. Okay, sir. Yeah. Yes, my father will be coming in Islamabad Sunday. Will there be studying, sir? ing studying. कौन सा वाला? जी studying. Will there be studying next day? Yes, Will I there will be be studying. you can ask like this कि will there be या will you be studying? there be की बजाय आप देखिए जब आप इनसे सवाल करिए जिससे भी अगर आपने जो है ना नाउन का इस्तेमाल करना है या किसी प्रोनाउन का तो देर की बजाय वो नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल आप आपसे बगान से पूछ रही है कि क्या आप स्टडी करेंगी इस संडे so you can say it like this कि will you be studying this Sunday? Okay, sir. जी जी. Okay, Sivka, will you be speech at 14th August? Yes, I will be speech in 14 August. Yes, good. And you can also say it like this कि will you be giving speech? Say and yes, I will be giving speech. Yes, sir. I will be giving speech in 14 August. Okay, good. Thank you very much. Sir, चलिए, in let's move 14 on. August जी होगा जी. या on 14 August होगा? On 14th August होगा. On 14th August. Yeah. Okay, sir. चलिए, let's move in to the next activity. Okay, so ये activity हम already कर चुके हैं. So I'll be going with this one. सही? This role play activity. इसमें क्या करना है कि a scientist to his friend. तो एक साइंटिस्ट है एंड दिस इज अ रोल प्ले एक्टिविटी एंड अ कॉन्वर्सेशनल एक्टिविटी. इसमें क्या है कि एक फ्रेंड है साइंटिस्ट से वो डिफरेंट किस्म के सवाल करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन द फ्यूचर, या विल देयर बी फ्लाइंग कार्स इन द फ्यूचर, विल देयर बी स्मार्ट वॉचेस इन द फ्यूचर, विल देयर बी एआई टेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर. तो इस तरह के वन ऑफ आई विल बी चूजिंग टू पर्सन फॉर दिस एक्टिविटी. वन ऑफ यू विल हैव टू बी अ फ्रेंड एंड द अदर पर्सन विल बी द साइंटिस्ट. तो साइंटिस्ट उसे क्या जवाब देगा, यस देयर विल बी फ्लाइंग कार्स इन द फ्यूचर, no there won't be any AI technology in the future. सही इस तरह के. So now there are ordinary classroom, but in 20 years there will be smart classroom. इस तरह के जो है ना you have to make it sentences. Just for this conversational activity, I'll be taking yes Mrs. Ismail, back at you again, and Muskan. Yes, sir. Yes, Muskan. So आपने क्या करना है? You are the friend of the scientist, and Mrs. Ismail, you are the scientist. So make it as conversational as possible. सही? मुस्कान आपने क्या Yes. पूछना है कि आपने जिस तरह इमेजिन करना है कि आप एक साइंटिस्ट के पास बैठी हैं जिसको फ्यूचर के बारे में पता है. सही? तो आपने उससे फ्यूचर के हवाले से सवाल करने की फ्यूचर में क्या ये चीज होगी, क्या फ्यूचर में ये चीज होगी. जी जी यस sir. मुस्कान. There will be cars on flying in the future. There will be Cars on flying. नहीं, cars flying flying. cars flying. Yes, there is a technology replacement, AI technology, which is going to be replace the cars. That cars will be that cars will run on the road as well as they can fly in the air. And the third feature will be they can float on the river or on the sea as well. There will be three properties of single car. This is the advancement of the technology which will we see inshallah in future.
uh, the there traditional will be classes will be replaced from the traditional classroom, or the methodologies will be replaced, and they will turn into computers and into smartphones. The smartphones will be on their wristwatches. The smartphone will become wristwatches in the replaced in the wristwatches, and the wristwatches contains uh, all of the features of the smartphone, through which they can learn, they can teach, or they can do their activities with that smartphone, with that smartwatches as well. So the learning and teaching activities will be very fast, will be very advanced through these technologies, and the traditional classroom will totally be replaced. This is the we can say advancement of the technology, which will be seen in the future. Okay, yes, and Muskan, you can also ask her different questions as well in this conversation. सर इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है It's okay, it's okay. Chale, so thank you very much, Mrs. Ismail, and thank you Sir, very much. thank you. Yeah. Thank you, Miss So Ba. yeah, okay, thank you. Chale, let's do this same conversation with two other people, Sibghanur and yes, Munazza Irfan. yes, sir. चलिए मुनज़्ज़ा इरफान एंड सिबहानूर तो आपने क्या करना है मुनज़्ज़ा इरफान यू हैव टू आस्क क्वेश्चन एंड सिबहानूर यू आर द साइंटिस्ट यू हैव टू टेल के फ्यूचर में आपने क्या क्या देखा है फ्यूचर में क्या क्या चीजें होंगी Okay, sir. Okay. I ask question. Sir, इससे रिलेटेड बनाने हैं क्वेश्चन जी ये क्वेश्चन जो तस्वीर में दिया हुआ है इससे रिलेटेड बनाने हैं जी इससे रिलेटेड देखें एक्टिविटी इस तरह है कि आप जो है ना एक साइंटिस्ट की फ्रेंड है सिबहानूर साइंटिस्ट है yes, और आप उसकी फ्रेंड है तो सिबहानूर ने फ्यूचर देखा हुआ है सही है उसको पता है कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें होंगी सो आपने सिबहानूर से ये पूछना है कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें होंगी व्हाट विल बी इन द फ्यूचर कि क्या फ्यूचर में उड़ती हुई गाड़ियां होंगी क्या फ्यूचर में स्मार्ट वॉचेस होंगी सही है देयर बी स्मार्ट वॉचेस इन द फ्यूचर और वो फिर आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगी okay, sir. Yes, Ganur. What will be flying cars in the future? सर इनकी आवाज सही नहीं आ रही अच्छा वो पूछ रही कि Okay. देयर बी फ्लाइंग कार्स इन द फ्यूचर yes flying cars in the future because technology is very fast Yes. Yes, ask another question, Sifa. No, sorry, Munazza Irfan. Okay, sir. What will be this watch in the future? सर इनकी आवाज सही समझ जी नहीं आ रही जी Munazza Irfan. Sir, I asked question. What will be this watch in the future? What will be? This watch. मुझे भी समझ sorry, I couldn't get you, Munazza. Can you write it in the chat box? Okay, sir. Yes, so that you can answer. That's a wristwatch. So will there be any wristwatch in the future? Yes. yes first watch in the future Yes, Because so, mhm. जी सर रेस्ट वॉच तो अभी भी है यस बट वो फ्यूचर के बारे में बात करिए ना जिस तरह अभी रिस्ट वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन में वॉच भी आ गई है घड़ी टाइम भी बताती है yes तो शी इज yes, आस्किंग यू sir. रिगार्डिंग दैट या Okay. यस आस्क अनदर क्वेश्चन वन मोर क्वेश्चन नजर खान Another question. Okay. What there will be flying motorcycles in the future?
जी Can you? What will be flying motorcycles in the future? okay, will there be flying motorcycles in the future? Yes, motorcycles will be flying in the future because technology is very fast, and the and motorcycle will be flying in the air, and they Good. can Yes. and they are sir water में इसको क्या कहते हैं? जी floating. Floating in the water, and they are floating in the water. Okay, good. Okay. Good. Thank you very much, both of you. ये मेरा answer हुआ. Let's proceed to the next one. Okay, this is a more role play here. For this one, I'll be taking Musarat and okay, Rehan. Can you hear me? Okay, yes, Sandesh. Yes, Sandesh. Okay, Chennai, for this activity, I'll be taking both of you. This is Ismail and Miss Musarat. तो करना क्या है कि grandfather to his grandson or his granddaughter, yeah, grandmother to his granddaughter. Let's take this activity like that. So grandmother tells her granddaughter how his or how her generation was better than the new generation. तो क्या है कि इसमें एक छोटी बच्ची है जो Okay, कि sir. अपनी दादी से पूछती है कि क्या है कि आपकी जनरेशन किस तरह हुआ करती थी, तो उसकी दादी फिर क्या बताती कि हमारी अच्छा. जनरेशन बहुत बेहतर हुआ करती थी कि देयर वाज दिस Yes. इन आवर जनरेशन, देयर वाज दिस एंड यू Yes, डोंट हैव sir. दिस. सही है, इस तरह बताना. सही है. सो Yes. मिस मुसरत, यस मिस मुसरत, यू आर द ग्रैंड मदर एंड मिसेस इस्माइल यू आर द ग्रैंड चाइल्ड. सही है. मिसेस इस्माइल यू हैव टू आस्क Sir, द क्वेश्चन. maybe. जी. Sir, I will be grandmother. Okay, you want to be okay. Good, Mrs. Ismail. Yes. Let's go with that then. Okay, जी. So Miss Musarat, you are आपने क्या करना है? You have to ask questions from I am a granddaughter. Yes, you are the granddaughter. Okay. Mrs. Ismail, how Yes, is granddaughter. I am a granddaughter. Okay. Mrs. Ismail, what do you think? This generation, no, that generation was better than this generations. And what do you think about that? What do you think about that? Yes, granddaughter. There are many aspects of life we can compare that that generation was better than your generation because there were no electricity, but there was a good sleep at night. There was a no tension of electricity load shedding, or there was a no disturbance of life because there were we did not dependent on the electrical appliances. Now the generation is this generation is totally dependent on electrical appliances, whether it is a vehicle, whether it is house appliances, or whether it is a house, because there are buildings in which we use electrical lifts to up, to go up the stairs. We can't use the stairs because there are many floors of that buildings. There were the purity of things. The things were we eaten was very pure. That was that we can say the milk, the water, and all of the things, all of the stuff were very pure. Hmm. But nowadays there is an impurity. There is an artificial life nowadays. There are many diseases causes due to these artificial or chemical things, and there is no health
rather than we are very modernized, we are very advanced, but there is a lot of impurities. There is a noise pollution, there is a voice pollution, there is water pollution around us. So we can say that purity of the life is lost with the new generation or with the time to passes around us. Now, grandmother, you say what is you seeing in your life, which is very Okay. good for you. Okay, I have often seen this generation doesn't have any times for their elders, especially grandmothers. They are Yes, busy in mobile so much. They are busy in electronic things like TV, computers, and smartphones and mobile phones. That's why we are this totally dependent on these yeah appliances. these electronic appliances, and they don't have enough time for their also parents. Parents Yes, they bit busy in doing their works, and they don't talk, and they don't have enough time for talking. And whenever we see look our children, whenever we see our children, they do not ask questions for their environment, for their about schools, and for their wherever they go. They don't questions. yes, They don't have questions for us. They are bit busy in mobile. That the reason is yes, this that generations were different from this generation, and yes. There is they no character building. There is no character building nowadays because absolutely. everyone is far from each other. They don't communicate each other. They don't suggest, or we can't get the suggestions, or we can get advices of our elders because we think that we are enough to we are enough to ourselves to do Yeah, each and everything. yeah, This and is the materialistic life, I can say. yes, you can say this is a materialistic life just because of these things. And they have whenever we try to speak with them, they feel interrupted, and Yes, they always say we are busy in our work. Don't disturb them. Don't disturb yes. us. And that's why I think this is Even they this. don't listen our suggestions or our talks or our discussion because they says that you are old age, your time is passed away, you don't know the upcoming times, or you don't know the nowadays what is going on, so you are Yeah, expire. Don't talk our yeah, yeah, matters. Yeah. yeah. You are absolutely in your own words. Just modern, जैसे जैसे जो है वो technologies is getting better, our generation is getting spoiled. Are you Yes, agree with me? spoil. Yes, yes. We Okay. can say that it is spoiling our generation. We don't say that we are going to be civilized, but we are Yeah. going to be worst. Not right. Yes. Okay. Yeah, okay. Yes. So thank you very much, both of you, Mrs. Snyder and Mrs. Yes, Sir. That was quite much of a sir. healthy and I think Thank you. experience-based conversation, I would say, because both of you Thank are you, quite sir. so much experienced in life. Yeah, my pleasure. Yes. अच्छा जी yes yeah, yeah. So अच्छा जी going towards the next activity, not quite much of an activity. ये क्या है कि you actually already know about the cardinal and ordinal numbers. इसके बारे में आप लोग को पता है कि क्या क्या चीज होती है, बट आप आज आपको सिर्फ इसका नाम पता चल जाएगा, सही. So cardinal numbers क्या है कि they tell us about how many of something there are, कि किसी चीज की कितनी मिकदार है. Cardinal numbers actually shows us the quantity of something. For example, I have one apple, I have two apple, I have three apples. तो क्या है, ये जो है ना हमें किसी चीज की मिकदार बताते हैं. When it comes to numbers, आप इसे कैसे रीड करते हैं? 1, 2, 3, 50, 60, 78, 200, इस तरह, सही. And ordinal numbers क्या है? Ordinal numbers actually show you the position of something. सही. ये आपको position बताते हैं कि first, second, third, 50, 60. So this is ordinal number. Cardinal number tells you about the quantity of something. मिकदार के बारे में बताते हैं cardinal number.
जबकि ordinal number shows you tells you about the position of something, किसी चीज की position के बारे में बताता है आपको, सही। So we have some यहाँ पर फिर से further explain किया गया है. I don't think this needs explanation. You can see it for yourself as well. Okay. So और इस activity की जरूरत नहीं है because this is an easier one. So I'll be going towards our last activity because we are also running short on time. Tongue twisters. So yes, can you tell me what is a tongue twister? Yes, anyone? There is a say in the shell shores like this. Exactly. Tongue twisters are something that actually bend or twist your tongue. कि आप उनको बोलने की कोशिश करते हैं, पर वो क्या करते हैं, आपकी जुबान को फंसा देते हैं. So इनका फायदा क्या है? Actually they help you pronounce the words. ये word की pronunciation में, and they also actually help you in fluency of words as well. जो words की language की fluency में भी आपकी help करते हैं, सही. So yes, I want now each and every single one of you individually आप लोगों ने क्या करना है कि इनमें से कोई से तीन पिक कर लेने हैं, सही, और आपने उनको 2-3 बार पढ़ने हैं. फॉर एग्जांपल white bulb, white bulb, white bulb, blue bulb, blue bulb, blue bulb, red bulb, red bulb, red bulb, इस तरह. या ice cream, you scream, we all scream for ice cream. या फिर red lorry, yellow lorry, इसको 3 बार इस तरह पढ़ना है, सही. So any three. और any three को हर एक को 3-3 बार पढ़ना है जी. Starting with you, Mrs. Ismail. Yes, sir. जी. So, from first one or any? You can choose any three of your own choice. He threw 3 balls. He threw 3 balls. Greek grabs, Greek grabs, Greek grabs. Peter Piper picked a pack of pickled pepper. Okay, so can you just repeat the last one 3 times? You Peter Piper वाला. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peppers, yeah. Pickled peppers. Peppers or peppers? Peppers. Okay, Peppers. 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 Okay, good. Thank you very much. Yes, Ms. Musara. Yes, sir. The 33 thieves thought that they trailed the throne throughout Thursday. The 33 thieves thought that they trailed the throne throughout Thursday. The 33 thieves thought that they trailed the throne throughout Thursday. And I 4 fine fresh fish for you. 4 fine fresh fish for you. 4 fine fresh fish for you. He threw 3 balls. He threw 3 balls. He threw 3 balls. Okay, good. Thank you very much. Yes, Sibhanul. Yes, sir. White bulb, white bulb, white bulb. Blue bulb, blue bulb, blue bulb, blue bulb, blue bulb. Red bulb, red bulb, red bulb, red bulb. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Okay, good. Thank you very much. The next one. Yes, Munazir Irfan. Yes, sir. She should sleep in a shed. She should sleep in a shed. Should sleep in a shed. And she's cheese. She's cheese. She is cheese. And zebras wing and zebras red. Zebras wing red and zebras red. Zebras red and zebras red. Okay, good. Thank you very much. Yeah. Next, Muskan. Yes. Yes, sir. तो ये है these are some of the tongue twisters. White bulb, blue bulb, red bulb, white bulb, blue bulb, red bulb, white bulb, blue bulb, red bulb. Okay, good. Another one. जी सर. दो और भी इस तरह पढ़ेगा. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. और सर red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Okay, thank you very much. And
Yes, Sibghanur. Yes, sir. Sibghanur. जी, so yes, आपने क्या करना है? You have to read and repeat these tongue twisters. The blue bluebird blinks. The blue bluebird blinks. The blue bluebird blinks. Four fine fresh fish for you. Four fine fresh fish for you. Four fine fresh fish for you. He threw three balls. He threw three balls. He threw three balls. और भी Okay, कैसा? good. बस ये thank you, that is more enough. Sandesh. Yes, Sandesh. Rehan. Yes, Rehan. Okay, so they are not replying, so I think this is the end of our class. लेकिन उससे पहले मैं ये आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगा कि we have shared the attendance in the group, so खुद को जो है ना attended मार्क कर दें आप लोग। दूसरी बात ये है कि you have to share your testimonial videos, सही? तो आप लोगों में से जिनको इशू ना हो, आप लोग क्या करें? आप लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बनानी है 30 सेकेंड्स की कॉलेज ऑफ इंग्लिश के हवाले से। उसमें ये बताना है कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी विद कॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हाउ इट्स गोइंग नाउ। उसमें से ये बताएं कि किस तरह व्हाट एरियाज यू हैव इम्प्रूव, कि कौन कौन से एरियाज आपने इम्प्रूव किए हैं, सही? एंड यू हैव टू टेल इट इन इंग्लिश, सही? तो उसके बाद ये क्या करें, ये आप मुझे भी सेंड करें, बिकॉज हमें किसके लिए चाहिए होती है कि टिकटॉक एंड यूट्यूब हो गया है एंड फेसबुक, तो उसके चैनल पे हमें ये लगानी होती है, सही है? ताकि ये हम क्या कर सके, कॉलेज ऑफ इंग्लिश के हवाले से लोगों को हम अवेयरनेस भी फैला सकें, सही? सो काइंडली ये वीडियो आप ये सरफात को भी सेंड कर सकते हैं 30 सेकेंड्स की वीडियो बना के, और मुझे भी आप सेंड कर सकते हैं, सही? एंड अबाउट होमवर्क, make a 30 seconds to 1 minute video on how you have changed over time, whether it was a sad change or a happier one. And what are the new change things you like about yourself, and what are the new change things you don't like about yourself? तो आपने ये होमवर्क करना है, इस तरह के वीडियो बनानी है 30 सेकंड से 1 मिनट की, जिसमें आपने क्या बताना है कि आप किस तरह चेंज हुए हैं, और आपका जो चेंज है, आप में जो बदलाव है, वो अच्छा बदलाव है या बुरा बदलाव है, और जो है ना कि आपको अपने बारे में अब क्या चीज़ें पसंद है और कौन सी चीज़ें आपको अपने बारे में पसंद नहीं है। सो आपने 30 सेकंड की से 1 मिनट की वीडियो इंग्लिश में डिस्कस करनी है, ये बताना है, एंड देन सेंड इट टू मी। ओके, सो एनी क्वेश्चंस? यस, लेट मी अनम्यूट यू। जी, एनी क्वेश्चंस? Sir, I have a question. जी जी Sir, we have a make a video for 30 seconds. Is for what is our English going on? What is okay? यस यस, यू And कैन the मेक second इट। will be जी, कि and आपने second. यहाँ जी जी. पहले तो ये करना है कि इंग्लिश के हवाले से, बट दैट इज एक्चुअली फॉर यूट्यूब चैनल, सही? यूट्यूब फेसबुक चैनल, वो Okay. होमवर्क नहीं, वो इसके हवाले से। ये जो होमवर्क है, इसमें क्या करना है, इसमें आपने अपने बारे में बताना है कि आप चेंज किस तरह हुई, और ये जो चेंज है, आप में जो बदलाव आया है, ये एक अच्छा चेंज है या बुरा चेंज है, और अभी Okay. आपको अपने बारे में कौन सी बातें पसंद है और कौन सी बातें नापसंद है, जस्ट Okay. दैट। We या have to make a 2 videos. yes, you have to make 2 videos, one for YouTube and another one for homework। Okay. जी, ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Not ओके sir. चले, ओके चले, ठीक है। सो काइंडली और रिमाइंडर अगेन कि आप लोग जो है ना खुद को प्रेजेंट मार्क करनी चाहिए, अटेंडेंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, खुद को प्रेजेंट मार्क कर दे। सो Okay, इंशाल्लाह sir. सी यू, जी सी यू ऑन थर्सडे, सही? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप, ऑन व्हाट्सएप एज वेल। चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू Allah वेरी Allah मच, Hafiz. Hafiz. अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।